हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो कि ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद आ रही है, बट मैं कुछ अलग कामों में उलझा हुआ हूँ। मैं दूसरे जॉब ढूंढ रहा हूँ और मैं करंट कंपनी में भी अपना काम कर रहा हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। बट कोई बात नहीं, आज हम लोग आए हैं इस वीडियो में और मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी जल्दी आपको वीडियोस मिलती रहे। और मैं कुछ अलग वे में भी प्लान कर रहा हूँ कि मैं जो मेरे साथ काम करते हैं या फिर कुछ दूसरे कंपनी में भी लोग काम करते हैं, मैं उनके साथ कुछ पॉडकास्ट का प्लान कर रहा हूँ। पॉडकास्ट रिकॉर्ड करूँगा कि कैसे कंपनी के इंटरव्यूज क्रैक किए जाते हैं, क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पॉडकास्ट में बात करेंगे। तो जल्दी ही चीज़ें वो सब आएगी इस चैनल पे, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखना। और उनसे आप लोग को क्लैरिटी मिलेगी कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सब सारी चीज़ें आपको पता चलेगी उन सब वीडियोज़ में। ठीक है? तो लेट ना करते हुए आज के आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि आज का वीडियो ये किस चीज़ के बारे में होने वाला है। ठीक है? तो हाँ, बेसिकली आज हम लोग पाइथन के लाइब्रेरीज़ जो पांडास है, उसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। ये वीडियोज़ एक सीरीज़ में आएगी 1 बाय 1 करके, और जैसे ही ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, मैं सारे को मर्ज करके एक वन गो में वीडियो बना दूँगा। ठीक है? क्योंकि पांडास काफ़ी इसमें कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो मेरे को उस तरीके से सेटअप वगैरह, फाइल वगैरह करके, कॉन्फ़िगर वगैरह करके सब कुछ दिखाना पड़ेगा। तो वन गो में मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ के एक साथ रिकॉर्ड कर दूँ। मैं थोड़ा आजकल बिज़ी चल रहा हूँ। ठीक है? तो आज का ये इंट्रोडक्शन होगा पांडास के बारे में, और थोड़ा-सा हम लोग पांडास के फर्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे और उसका प्रैक्टिकल करके देखें। ठीक है? तो ठीक है, चलते हैं आपको अपने स्क्रीन पे लेके और वहीं पे सारी कुछ हम लोग बातें करेंगे। सबसे पहले सीखेंगे कि पांडास होता क्या है, क्यों पांडास हमें ज़रूरत पड़ी। ठीक है? और पांडास के अलग-अलग टॉपिक्स क्या हैं, क्या हम आज पढ़ने वाले हैं इस स्पेसिफिक क्लास में। ठीक है? चलो, तो चलते हैं सीधा लैपटॉप के स्क्रीन पे। ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पांडा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पांडास आखिर होता क्या है। ठीक है? तो मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ। ठीक है? तो ओके, so pandas, what actually pandas is? So pandas is basically a python library. Second thing is like it is a open source. I hope you know the basic pythons and you know these terms like what is library and what is open source, because these things is the basic things, and I have also covered these things in my python playlist as well. So if you are not familiar these terms and you don't know the Python, so you can go on my playlist and you can watch the Python, and then you can come to this video. Okay, so first thing is Python libraries and the second thing is open source. Now talk about why pandas is useful and why we need it. So let's talk about why pandas. So first you have seen like the what is pandas. So this is a Python libraries and this is the open source Python libraries. And now let's talk about the why pandas we need. Pandas is basically it is designed for let's say data manipulation or let's say analysis. तो यहाँ पे कुछ लोग स्पार्क वगैरह, पाई वगैरह जानते होंगे। तो पाई में भी ये चीजें होती है, डेटा मैनिपुलेशन और डेटा एनालिसिस। बट जो डेटा एनालिस्ट के करियर के साइड जानते हैं, उन्हें ज्यादातर पाइस्पार्क पे काम करने को नहीं मिलता है, वो ज्यादातर पांडास पे ही काम करते हैं, जो डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, डेटा एनालिसिस पे काम करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं। उन सारी चीजों में पांडास हेल्प करती है बहुत अच्छे तरीके से। इसलिए ये पांडास काफी जरूरी है सीखना, जो डेटा एनालिस्ट के करियर के साइड जा रहे हैं। ठीक है? पांडास के बाद ही वो पाइस्पार्क को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो पांडास अगर आप जानते हो तो पाइस्पार्क आपके लिए इजी हो जाएगा पाइस्पार्क सीखना। तो पाइस्पार्क की भी वीडियोस आएगी, एक प्लेलिस्ट आएगी। पहले पांडास हम लोग सीखेंगे, उसके बाद नमपाई सीखेंगे, उसके बाद मैं पाइस्पार्क आप लोग को बताऊंगा। ठीक है? पहले पाइथन अच्छे से कवर करते हैं। ओके, उसके बाद आप लोग को इजी हो जाएगा बिल्कुल पाइस्पार्क सीखना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि इट इज डिजाइन फॉर डेटा मैनिपुलेशन एंड डेटा एनालिसिस काइंड ऑफ थिंग। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हु बिल्ट दिस not Python, sorry, Python, Python is built by the Guido van Rossum, and this library, Pandas library, is not built by Guido.
because it's the libraries of the Python. Python is built by Guido and the Pandas is built by some other person. So who is that person? Do you know that? If you know, you can comment the answer. Okay, so let me tell you. Pandas is built by McKinney, okay? And when it was built in 2008, ये Pandas बहुत ही ध्यान में रख के इन्होंने बनाया था कि कुछ फाइनेंशियल डेटा, ट्रांजैक्शन डेटा, ये सब जो आता है उस पे डेटा मैनिपुलेट और डेटा एनालिसिस करने के लिए ये पांडास बनाया गया था उस टाइम पे 2008 में, ठीक है। और यहाँ से वो पाइस्पार्क कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, वो सारी चीजें हम लोग पाइस्पार्क में बात करेंगे। दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा रेलेवेंट हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पांडाज आप लोग पढ़ो और उसके बाद हम लोग पाइस्पार्क पढ़ेंगे। अब आप लोग बोलोगे कि ये मैं जान के क्या करूंगा कि पांडाज किसने बनाया, कब बनाया, ये मेरे को जान के क्या जरूरत। तो आप एक टेक्नोलॉजी पे अच्छे से पकड़ तभी आप कहे जाओगे जब आपको पूरा हिस्ट्री का नॉलेज है टेक्नोलॉजी के बारे में, और जो फ्यूचर में आने वाला है इसका क्या डिमेरिट्स था, तब दूसरे टेक्नोलॉजी इसके अल्टरनेटिव निकाले गए, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तभी आपको किसी टेक्नोलॉजी पे अच्छे से पकड़ बना पाओगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि पांडास इज अ ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरीज एंड इट इज डिजाइन फॉर डेटा मैनिपुलेशन एंड डेटा एनालिसिस एंड इट इज बिल्ट बाय मैकनी इन 2008 which mainly focused on the financial data and the transaction data, which is also considered as a financial data to analyze to perform the analyze on those data। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। लेट्स से कि हमें डेटा क्लीनिंग करनी पड़ती है, ठीक है, एनालिसिस करनी पड़ती है, इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, इंजीनियरिंग फॉर मशीन लर्निंग, इंजीनियरिंग नॉट फीचर इंजीनियरिंग, देन फाइनेंशियल एनालिसिस, बिजनेस रिपोर्ट एंड मेनी मोर, ठीक है। तो इन सब चीजों में ये पांडास काफी ज्यादा यूज होता था पहले, अभी तो खैर ये आ गया है पाइस्पार्क, तो अभी ज्यादा लोग पाइस्पार्क पे फोकस कर रहे हैं। बट पाइस्पार्क के आने के पहले तक ये पांडास इन सारी चीजों में काफी ज्यादा हेल्पफुल था, काफी ज्यादा हेल्प करता था, और इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड पांडास काम करता था। डेटा क्लीनिंग, डेटा एनालिसिस, फीचर इंजीनियरिंग फॉर मशीन लर्निंग, फाइनेंशियल एनालिसिस, बिजनेस रिपोर्ट और काफी सारी चीजें थी, ठीक है। अब पांडास क्या होता है कि पांडास में आपको एक डेटा स्ट्रक्चर दिया जाता है। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ पांडास गिव्स यू टू मेन डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर का नाम सुन के घबरा मत जाना लिंक लिस्ट और ग्राफ ये सब के बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूँ। ये पांडास हमें दो डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। उस डेटा स्ट्रक्चर का यहाँ पे नाम है, पहला आपका आ जाएगा सीरीज, जो कि ये होता है 1D मतलब वन डायमेंशनल। दूसरा होता है हमारा डेटा फ्रेम। अब ये पाइस्पार्क का डेटा फ्रेम नहीं है, ये पांडास डेटा फ्रेम है। पाइस्पार्क का डेटा फ्रेम अलग होता है, पांडास का डेटा फ्रेम अलग होता है, बट दोनों रेलेवेंट है, काफी ज्यादा रेलेवेंट है। अगर आप पांडास डेटा फ्रेम जानते हो तो पाइस्पार्क डेटा फ्रेम जानना आपके लिए काफी इजी हो जाएगा, ठीक है। अब जो डेटा फ्रेम होता है ये 2D होता है और कंसीडर लाइक ए टेबल, एंड दीज टू आर द बैकबोन ऑफ द पांडा। बैकबोन ऑफ पांडा, पांडा आपको पढ़ना है तो दो चीजें आपको सीखनी ही सीखनी पड़ेगी। फर्स्ट है सीरीज, सेकंड है डेटा, पांडास डेटा फ्रेम। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पाइस्पार्क डेटा फ्रेम, ओके। तो ये थी पांडास की इंट्रोडक्शन। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं व्हाट इज पांडास। हमने देखा जो कि Pandas is an open source Python libraries which is designed for data manipulation and data analysis, and it is built by McKinney in 2008 and which provides the services to perform the data cleaning, data analysis, featured engineering for machine learning, financial analysis to create a business report and many more. Pandas gives us two main data structure, which is a series and the data frame, okay. So in this particular video we will talk about the series, what is series, why it is useful, and how to write the code while creating the series, how to create it, and all our things we will talk about the series. So let's start। जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि series 1D array है, तो let me write it here, it is a 1D array, and let me give you some examples so you will understand in the better way। तो let's say हमारे पास एक सिंगल कॉलम है, लेट्स से नेम, ओके, नेम, लेट्स से हियर राम, महेश, श्याम, ओके। दिस इज अ सिंगल कॉलम, ओके, व्हाटएवर इट इज अ टेबल और एनीथिंग और फाइल, ओके। ये हमारे पास एक सिंगल कॉलम है। अब सीरीज क्या करता है कि सीरीज आप जब परफॉर्म करोगे आप, तो ये जो भी कॉलम है, कॉलम के जो वैल्यूज हैं, ये इंडेक्स आगे लगाता है, और इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, हमेशा जीरो से, ठीक है। 0 1, ठीक है। इंडेक्स आपने सिक्वल में भी पढ़ा होगा, सेम तरीके से इसमें भी होता है सीरीज में। तो हमारा
जब प्रिंट करोगे आप, जैसे कि ये हमारा एक नेम कॉलम है और ये सब वैल्यू हैं, तो इसको आप प्रिंट करोगे तो आउटपुट ऐसे आएगा आपको, 0 राम 1 महेश 2 श्याम, ऐसे करके, ठीक है। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू पे काम करता है। अगर यहाँ पे मान लो कि लेट्स से मार्क्स है, हमारे पास मार्क्स कॉलम है, इसमें है हमारे पास 85 90 95, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 1 2, ठीक है। तो ये होता है सीरीज, एक सीरीज वे में चलता है 1D एरे। और सीरीज में एक और चीजें हैं कि आप इसमें कुछ मैथ वगैरह भी कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे मीन मेडियन वगैरह निकाल सकते हो, मीन मैक्स निकाल सकते हो, मीन मेडियन मीन निकाल सकते हो, मेडियन निकाल सकते हो, मिनिमम मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकते हो आप यहाँ पे। और इसके लिए आपको कोई भी लूप वगैरह की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिना लूप के आप ये सब परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी सीरीज का इंट्रोडक्शन, पांडास का इंट्रोडक्शन और सीरीज का इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि पांडास आखिर, सॉरी पांडास नहीं सीरीज आखिर हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं और इसके कोड कैसे लिखते हैं, ठीक है। चलो, तो इसके लिए मैं, मेरा भी खैर जुपिटर नोटबुक अभी काम नहीं कर रहा है, पता नहीं कुछ क्रैश हो गया है, फाइल वगैरह डिलीट हो गया है क्या। तो उसके लिए मैं अभी आप लोग को बताऊंगा। इसमें आप अपना ब्राउजर ओपन कर लेना। अगर आप जुपिटर नोटबुक आपका चल रहा है तो आप उसमें कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ब्राउजर ओपन करना, ब्राउजर में आप सर्च करना यहाँ पे गूगल कोलैब, और जो फर्स्ट वाला आएगा ये बेसिकली गूगल के द्वारा दिया गया है। इस पे आप फर्स्ट लिंक पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी करंट ईमेल आईडी से लॉगिन रहेगा आपका ब्राउजर, वो डायरेक्ट यहाँ से ले लेगा। और ये फाइल आपको सेव होगा गूगल ड्राइव पे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो बाद में रेफर करने के लिए, ठीक है। और इसमें ये एक चीज़ और है कि ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता, और इसमें आपको कुछ भी इंस्टॉलेशन लाइक PIP इंस्टॉल आप लोग लिखते थे, ये सब चीज़ें इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कम से कम टाइम में आप यहाँ पे कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, और कोई भी चीज़ें इंपोर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे आपको, ठीक है। तो मेरा एक फ़ाइल यहाँ पे बना हुआ है, मैं इस फ़ाइल को ओपन कर लेता हूँ। और लॉगिन करने के बाद अगर आपका कोई फ़ाइल नहीं बना है तो आप कुछ नहीं, आप यहाँ पे जस्ट यहाँ पे क्लिक करना, ये फ़ोल्डर वाला, मैं बैक करके बताता हूँ आपको। यहाँ पे जाओगे तो इस तरह का आपको डैशबोर्ड मिलेगा। यहाँ पे न्यू नोटबुक पे क्लिक करोगे तो आपका एक नोटबुक क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये लोड ले रहा है, ओके। तो यहाँ पे नोटबुक हमारा क्रिएट हो गया, और यहाँ पे देख रहे हो कि गूगल ड्राइव का सिंबल दिख रहा है, ठीक है। तो ये नोटबुक आपका गूगल गूगल ड्राइव में जाके सेव हो जाएगा। और मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ पांडास सीरीज, ओके। और यहाँ पे आपका AI फीचर्स भी इधर अवेलेबल है, जेमिनाई। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ AI से डायरेक्ट आप पूछ के यहाँ पे कोड आप डाल सकते हो। और इसके काफ़ी सारे आपको एजेंट्स दिए गए हैं, 2.5 फ्लैश और 3 फ्लैश, तो दोनों में से कोई आप यूज कर सकते हो। और 3.1 प्रो है जो अपग्रेड वर्जन है, आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो आप ये भी यूज कर सकते हो। तो फॉर द नाउ वी कैन जस्ट क्लोज इट। और एक और यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताऊंगा, जहाँ पे आपका नोटबुक ये लॉन्च हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे आपको एक कनेक्ट करके ऑप्शन दिखेगा। कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो गूगल के जो सर्वर है उससे आपका ये कनेक्ट हो जाएगा नोटबुक, आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है यहाँ पे, इसलिए आपको रैम और डिस्क दिखा रहा होगा। जो गूगल हमें प्रोवाइड करता है रैम और डिस्क, उससे हम कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमें कुछ भी लोकली सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। चलो, अगर आपको कोई बोले, जैसे कि आप अगर जुपिटर नोटबुक को कर रहे हो, तो जुपिटर नोटबुक पे हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है? सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना होता है पांडास लाइब्रेरी है ये पाइथन का। तो इनबिल्ट तो पाइथन के साथ नहीं आएगा, आप लाइब्रेरी यूज कर रहे हो तो लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसको बाद इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इंस्टॉल कैसे करोगे? पिप इंस्टॉल पांडास, ठीक है, ये डालोगे तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बता रहा है, क्योंकि हमारे सिस्टम में आई थिंक ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। सिस्टम में नहीं, ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे प्रोवाइड करता है हमें, तो यहाँ पे हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग लोकली कर रहे हैं, जुपिटर नोटबुक वगैरह पे ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करोगे कि इंपोर्ट करोगे पांडास को, तो इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ओके, यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो, तो हमारा पांडास इंस्टॉल हो गया और इंपोर्ट हो गया। अब चलते हैं सीरीज क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। So let's say I will create a markdown and I will say creating a series from a list. Okay. And let me convert it into the markdown cell. Whether I can do it or not, I think I cannot do it, but here above cell we can. Okay, now run it. Let me create some bold text here. Now we'll create a series. How to create a series? So let's say I will create a array of the marks which will store the
marks of the student. So I will create one variable which is called the marks, and we have imported this pandas as PD. So as PD means this is the alias that we are passing to our pandas. Okay, so we'll refer this alias and we'll write like PD dot, and what we are creating the series. Okay, and if you just remove this and you can see like PD dot, what are all the things that is available? You can see the series, flags, annotation, compact, core, pandas, API, array, arrow, D type. These are the things which we have available. So what we are creating series. Okay, so we'll write PD dot series. So series is a function. Okay, so how we create the function in the parenthesis, right? And what we are creating, what we are storing marks. So many of the students are there. So we'll create a arrow, not arrow, sorry, array, and we'll store the marks. Let's say 85, 90, 78, 92, 88. Okay. To print this, you can simply write print marks. Okay. So here you can see that what I told you, it assign an index to every value. So these are the value that we have stored as an array in the marks variable, and we are printing this marks, and you can see that 85, 0, 91. So index always start from the 0. So 85 is this. So for the 85 it is assigning a 0, and in the last you can see that it is showing D type int 64. Okay, so this is basically by default it is giving the data type that what you have the assigned inside the array. So these all the values is considered as a integer. That's why it is showing the data type int. Okay, so this is the pandas how you create, sorry, not pandas. This is the series in the pandas, that how you create a series. Okay, now let's create some more series with, now let's create a series with some custom index. Okay, series with custom index, and you will surprised here. It will not show 0, 1, 2, 3, 4 here, because we are creating a series with our custom index, not which is by default. Okay, so here we are not assigning any custom index. That's why it is taking 0, 1, 2, 3, 4. But here we are giving the custom index to our series. Okay, so let's see how we create it. So again, I will take a variable which is called the marks, and I will say like PD dot series. Series is will be capital, and we'll store our marks here, which will be 85. Same marks I am taking here: 85, 90, 78, 92, and 88. Okay, and assigning the index, let's say here Alice. Let me keep it in the same way, not double quote. Let gives all the values in the single quote itself. Alice, well, we have the five marks, five index, so we have to give the five values here. So Alice, Bob, let's say Charlie, and yeah, David and Eve, let it be, and friend marks. Okay, so let's print it. So here you can see this is the index that we have assigned, custom index this is, and this is the by default index. So our index is like the Alice, Bob, Charlie, David, Eve. Our value is 85, 90, 78, 92, 80. 88. So index is not a kind of things, it will be always a value, integer value, or always start from the 0. Yes, index is always start from the 0 if you are talking about the real index, not the custom index. And here you can see we are creating the custom index. This is basically the a string index here that you are creating. Okay, and let me show you one more thing here. So let me print here, print. Let's say I want to print the marks of someone. Let's say Alice marks. So mark Alice. Okay, and here you can see in the last 85. Okay, so Alice marks is 85. So this is the thing that how you refer the things in the series, how you print the values, how you can create the custom index, and how you can get the value of someone. So here if you are saying marks of the Alice, so here it is not treating Alice as a index, it is taking Alice as an object, and whatever we have the value of the Alice, it will be print, which is basically 85, and here it is giving the 85. Okay, I know like I'm talking in English, but this is okay if you are going in the IT and if you are working in the IT. So this is the mandatory that you have to speak in the English as well. But sometimes I go in the Hindi as well. So no need to worry. If you are comfortable in the English or the Hindi, you can comment down and you can tell me like continue with the English and continue with the Hindi. So I will make the videos according to that. Okay. Now let's create a dictionary here. Okay.
So I will create one markdown here, and here I will say creating from a dictionary, creating a series from a text. Okay. So here I will say prices, which is a variable, and will write pd dot series and how to create a dictionary in the curly braces with the key value pair. Okay. So let's say we have apple. Okay, which is a price of, let's say, 150.0. I'm taking the float value here. And let's say the second thing is, let's say I will consider the, okay, let's say kiwi. Kiwi will be 200.0. Let's take some other value, like this is the price. This is not related to the fruits specific. So I will say Tesla. Okay. And let's say 900.5. Okay. These three values we have. And I will say here print prices. So here you can see these are the things which is printing. Okay. Fine. These things you have seen previously as well. But pandas always stores a single type of data type. Okay. In list, you have heard about list can store multiple types of data types. In one list, you can keep the int, float, a string as well. You can keep in one list, but pandas always keep a single type of data type. This is the reason because pandas is faster as compared to the list. That's why for the data analysis purpose we mostly use the pandas. Okay, obviously we use the PySpark, which is more faster than the Python and all the libraries of the Python, but here we are learning the pandas, so we compare here from the list. If we go with the PySpark videos, then I will tell you how the PySpark is more efficient and more success API of the Python. The people use it. Okay, so let's move it. And some of the operations that you can perform here. So let's say I will see here and you can perform the operations. Let me create one markdown first. So I will say series operation. Okay, and let's say if you want to calculate the mean. Okay, so print, let's say you want to create the mean value of your price. So let's say prices dot mean. Okay, let's see what it will answer. Okay, so it is giving 416.8333. Okay, so this is the mean value. Second thing, you can calculate the max. So let's say prices dot max 900.5. This is the maximum value. Now let's check the print marks of mean and say print marks dot max. Okay, so marks of mean is 86.6 and the maximum marks is 92. You can go up and you can see the maximum marks is 92 and it is calculating the mean value here. Okay, now you can form the minimum value. You can also check that. So let me show you here. Print marks dot mean and print prices dot mean as. Okay, so what is the minimum marks is 78. The minimum price is 150. Okay, you can see here the minimum price is 150 and the minimum marks was the 78. So you can also check that. Yeah, so minimum marks is 78 here. Okay, now you can perform the sum operation here as well. So let's say print marks dot sum, and here you can say the prices dot sum as well. So marks dot sum is 433 and the prices of sum is 1250.5. Okay, now you can also check that which is greater than this value. Okay, so let me show you here. Print marks is greater than, let's say, 80. Okay, now print it. So which is the greater than 80? So let me show you here. 80. Okay, so we have four values which is greater than 80: 85, 90, 92, 88. Alice, Bob, Charlie, David, Eve. Okay, so basically it is giving all the values along with the true and false, which is greater than 80 or 90. So Alice is true. Why? Because Alice have the values of 85, which is greater than 80. Fine. Bob has the value of 90, which is greater than 80. So let me show you here. Bob is also true. Charlie is false. Charlie is false. Why? Because Charlie is here and this is the value of 78, which is less than the 80. That's why it is giving the false value here. David is 92 and the Eve is 88.
Okay, so here you can see David and Eve is true. Okay, and this all the data types are boolean because it is giving the value in the true and the false. So yes, this is our pandas introduction videos and the first chapter of the pandas, which is called a series. So you can go deep inside that and you can check like how to create series, how to perform some operations and all the things, how to create the custom index and all the things. तो ओके, सो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी ही दूसरे वीडियोस में, और मैं जो भी प्लान कर रहा हूँ आई होप कि आपको वो जल्दी मिल जाए, और मैं कुछ टॉपमेट पे कुछ अगर इंटरव्यूज वगैरह कोई शेड्यूल करते हैं तो मैं ट्राई करूंगा कि जो भी मॉक इंटरव्यू मैं लूँ मैं उनका रिकॉर्ड करके इस चैनल पे डाल दूं, ताकि आप लोग को रेफरेंस मिल जाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंपनी में, उस तरीके से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो चलो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।